Hi sassy Nari, thank you for tuning in today to Little Fixes podcast. आज फोटोग्राफी की बातें होने वाली हैं विद फोटोग्राफर एंड मॉम ब्लॉगर श्वेता तंवर मुखर्जी। इस एपिसोड में फोटोग्राफी की बिल्कुल बेसिक्स की बात हुई है, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स की बात हुई है जिनको फिक्स करके आप अपनी पिक्चर्स को और बेटर बना सकते हैं। तो ये जो टिप्स श्वेता देंगी इस एपिसोड में, ये चाहे आप एक ब्लॉगर हो आपके लिए यूजफुल है, चाहे आप सिर्फ ऐसे ही फोटो लेते हो अपनी मेमोरीज के लिए, कीपसेक के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करने के लिए, तो हर तरीके से ये जो सिंपल टिप्स हैं ये आपकी फोटोग्राफी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। और अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लगे तो डोंट फॉरगेट टू टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पे शाउट आउट भी दे सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी। This is Macleod। मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. So today I am thrilled to welcome Shweta on Little Fixes podcast. So Shweta Tanwar Mukherjee, she is a photographer, but she is a lot more things. She enjoys natural living, natural skin care और उनकी Instagram feed पे आपको बहुत सारी positivity, motivation मिलेगा। तो हम लोग बात फोटोग्राफी की ही करेंगे, बट उससे पहले I welcome you, Shweta, on Little Fixes podcast. Thank you so much, Maitri. I'm so glad and thrilled to be on this podcast. Okay, so Shweta is also thrilled. तो आई एम श्योर कि ये एपिसोड भी थ्रिलिंग होगा, आपको बहुत सारी नई इन्फो जानने को मिलेगी फोटोग्राफी से रिलेटेड। तो श्वेता की लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जैसे मैंने अभी बताया। तो पहले स्टार्ट करते हैं श्वेता की स्टोरी से कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, क्या वो हमेशा से एक फोटोग्राफर थी या पहले वो कुछ और करती थी, देन शी मेड द शिफ्ट। तो श्वेता प्लीज़ हमें अपनी जर्नी बताइए थोड़ी सी। So, I did my literature from Delhi University. उसके बाद मैंने अपना MBA किया और as usual job corporate world में चली गई. Photography was always my passion since my college days, but it was always at a backseat. वो उतना ज़्यादा limelight में और उतना professionally कभी उस टाइम पे सोचा नहीं था. But then job की 10 साल अच्छे से अपना, then I got pregnant and my job was I was handling a good team of 25 people. I was a DGM and into the marketing and events, so बहुत ज़्यादा traveling होता था. So that's why I quit my job and तब मैंने सोचा कि उतना travel with baby नहीं कर पाऊँगी और शायद बाद में भी ना कर पाऊँ after delivery as well because time देना है. और तब मेरी priorities मैंने समझी कि I think I should just give time to my child and इसलिए मैंने job छोड़ दी. But then of course being I really wanted to work. So then I thought कि why not photography, ये मेरे हाथ में होगा in terms of whenever I want to schedule my shoots. मुझे इस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ में passion है, मुझे शौक है इस चीज़ का. और मैं काफ़ी photography करती थी अपने friends के लिए जिनके नए businesses आ रहे हैं या कुछ है या अपना घूमने जा रहे हैं तो landscape photography. सबने काफ़ी बोला कि बहुत अच्छी photography है. कभी ऐसे सीखी नहीं है professionally, कोई कोर्स नहीं करा है, बस कैमरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करा है. उसी से बहुत कुछ सीखा है और थोड़ा सा क्रिएटिव हूँ मैं, मुझे थोड़े अलग नज़रिए पसंद आते हैं लाइफ में भी और वैसे भी. तो आई थिंक मैं डिफरेंटली उनको कैप्चर, जो चीज़ सब लोग कर रहे हैं मुझे वो करना पसंद नहीं होता, या मुझे लगता है कि तो सभी कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा. तो वैसे मैंने सोचा कि अब बेबी भी है और अब मुझे काम भी अपना ढूंढना है, कुछ करना है. मतलब आई डोंट वांट to be settle for fact that कि just मैं अपने आप को ही खो दूँ या I don't want to work at all. I really wanted to work because that something keeps me happy and positive and sane. And that's where I thought कि photography is something मैं professionally उसको ले सकती because it is at my convenience. मैं अपना time, अपना schedule, अपनी बेबी का ध्यान उस हिसाब से रख सकती हूँ. And this is something I can do for 24 hours, like for 365 days. I love doing it. So why not to probably take it, in a more professional way. That's when I started approaching and posting my images on Instagram, making a brand name, which is the white cameras, and making my profile, talking to a lot of brands. And parallelly, I started doing my experience sharing as well. So वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा feedback मिला from the brands wherein I used to show them the visuals, the product shoots मैं उनको देती थी. अगर कोई brand कुछ बात करता था in terms of reviews and all. So I used to give them a little more than they were expecting from me.
And those images were, of course, shot from a DSLR and nicely clicked with some composition. So they used to love it. So उस वहाँ पे भी parallelly मेरा काम काफ़ी appreciate हुआ. And I used to get good feedback. So then I thought that this is my cup of tea and I should probably take it. And best part was that my baby's health or my family was not getting little disturbed, because when you do that's the reason I left and quit my job, because I really wanted to give time to the family, to the house, and to the baby. And I really wanted to do something which I can, at this phase of my life would support me. I don't want to take stress. I don't want to do something which keeps bothering me or makes me real grief or guilty मुझे feel कराए किसी ना किसी चीज़. I really wanted to go easy on my life. I really wanted to go slow on my life. कि जो चीज़ें हैं उनको appreciate करना उससे. तो मैंने इस तरीके से सोचा और it just the entire universe that it helped me to come out of that phase of a corporate life wherein I used to take calls at 12 and like a maniac I used to work and from there I've slowed down a lot. And that my entire family knows it. I mean, I was anxious, I was full of anxiety, I was sad, I was always irritated. वहाँ से, Maitri, it's a good leap that I took, because I just slowed down in my life and I thought that nothing is, more important than your own self. Right. If you're not happy, there's no point of doing anything. And you should do things which makes you happy, which gives you a peace of mind. You should have clarity. Because if you're not happy inside out, your relations get, little affected, your work, you don't see yourself, in a good light. So I think वो सब चीज़ें मेरी बहुत turn around हो गई just because I took something which I really love, and I was very slow in my process also. ऐसा नहीं था कि एकदम से काम भी मिल गया. काम मिलने में भी time लगा, काफ़ी time लगा. But I was easy and I was like, okay, I'm just working, that's what I can do. So that's how the entire thing started. Okay. और when you discovered everything, to know yourself better, ये सब चीज़ें help करती हैं mentally हमें भी. Then you started sharing about these things also. Like I see that you have a course for women. Correct. Right. So, Especially, I think the journey started honestly 3 years back. Now I am more confident to talk about it. Okay. So because I have changed and I've transformed myself in a very better way, because when I quit my job and when you have a salary coming in, आपके पैसे आ रहे हैं, you are more confident and suddenly everything stops, then आप खुश हो, but आपको पता है deep down कि यार something is missing, कुछ एक problem. I have a baby, I have a husband, I have a family, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप as a person is missing out on somewhere, because you were a career oriented. I was at peak of my career when I quit my job. But then it all started, and I said, no, it's for good. I really went a little, a very mindful in my approach, and little bit, I would say, spiritual, not at all religious. But then I really thought that, I really believe the fact that कुछ होता है तो वो आपकी life में, it's for you, it's meant for you. And now these signs are, probably taking me to that level. So I started, reading a lot. I utilized my time, and I thought this is what I've chose. ये मुझे किसी ने निकाला नहीं है जॉब से, मुझे किसी ने बोला नहीं है. आपको सबने बोला है आप करो जॉब. मेरे बॉस ने मुझे एंड तक बोला आप जॉब करो. So I realized in my head कि श्वेता, this is your own decision. You have to respect it. It is your own choice. Now if you made a choice, why are you being so anxious and probably regretting it? You cannot regret your choices, right? सही है गलत है वो तो नहीं पता, वो तो आने वाला time बताएगा. Then I said why? Then I read a lot, and then I discovered that life is so much beyond these things, and now that I have a baby, I have a life, I've given birth to a life, he's living, and then I was so engrossed in him. And then when he crossed 6 months, 8 months, I was learning so much from him. Then I thought that this is, and I really believed her life makes stages out there which gives you the course for the next action. So I really believe that this is now like a precursor to my next action. So my next action was photography and content, and probably, being little slow and living life in sync with, nature. It's been 4 years, but now I'm talking about it a lot on social media, because I've been getting so many messages from these women who are so troubled at some level
on a very silly things, on a very petty things, you know, at a very, if I see, then I really wanted to do this कि मैं उनके लिए एक ऐसी चीज़ बनाऊँ which is on my experience base, क्योंकि मैं भी वैसी ही थी, ठीक है ना, and it is very normal to be that way. तो how you can probably change yourself is very important. तो इसलिए मैंने अब उसके बारे में, पॉजिटिव लिविंग के बारे में, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को चेंज करा है, तो अब मुझ में then I did 3-4 I did my certification courses as well to understand the psychology and everything, how our brain works, how मैंने काफ़ी पढ़ाई भी करी उस बारे में. And now that I thought कि it is time for me to talk about it because I really wanted to and I love talking about it, and I've got a very good response from people, from feedback that they find it helpful. You know, you need to be a source of positivity so that people will attract and people would love to be in your company. Okay, and you found your outlet through photography. Honestly, Yes. आपका जो ये knowledge है in positivity, happiness इन सब पे लेकर, I think we can do an entire podcast episode with it. Sure. It will be really amazing, really inspiring. पर हमने जैसा आज बोला है कि आज हमें photography Yes. के बारे में बात करनी है, तो let's move towards photography. तो फोटोग्राफी से स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका फेवरेट फोटोग्राफर कौन है जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं या फिर who you look up to? I really love Mr. Bobby Joshi's photography. मतलब उनका काम मुझे बहुत पसंद है. There are many, but इनका मुझे and of course Raghu Rai is there. मुझे उनका भी काम बहुत पसंद है. ये दो लोग हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ उनके काम से, इनकी कंपोजिशन से. Really love them. तो ये जो फोटोग्राफी होती है इसकी हाँ जी. आपके हिसाब से क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे अगर हम सोशल मीडिया के टर्म्स में बात करें तो ये हमें भी पता है कि इंस्टाग्राम हो, आज वही हमारा आजकल मेन सोशल मीडिया चैनल है, तो उस पर दैट इज़ अ वेरी विजुअल मीडियम हम लोग बोलते हैं. तो उसमें एक अच्छी फोटोग्राफी वी नो कि ब्राइट पिक्चर्स होनी चाहिए या क्लियर पिक्चर्स होनी चाहिए. उसके सिवा आपको क्या लगता है कि व्हाट एल्स आर द इफेक्ट्स ऑफ गुड फोटोग्राफी? So yeah, photography on social media. So when we talk about content, so content is what? Content is visual plus the words, right? आपका वो balance होना बहुत ज़रूरी है for any good, the entire composition or the creation for the social media. अगर आप कुछ बात बताना चाहते हो and if अगर आप उसको explain अच्छे से नहीं कर पाओगे words में और आपकी image बहुत अच्छी है, शायद वो चल जाए वहाँ पे content, आपको बहुत अच्छा engagement, reach और वो it gets viral. तो आई थिंक फोटोग्राफी उसमें वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज विजुअल इज समथिंग विच गेट्स ऑन द फर्स्ट ऑन योर फीड, देन यू रीड द वर्ड्स. सो आई थिंक मेरे लिए हमेशा से एक अच्छी इमेज मुझे ड्राइव करती है. मैं उसको पढ़ूँ, उस कंटेंट को पढ़ूँ या उसके बारे में पढ़ूँ, या कभी कभी इतनी सुंदर होती दैट आई डोंट वांट वर्ड्स फॉर दैट. It is so nicely composed, or it's so beautifully done, or it is so creatively done, so that I really don't want to read anything because it gives me that emotion, or it tells me, like, if a mother and child is there, they're playing, or any kind of in composition, or probably a fat lay of products, on social media, it gives me such a soothing thing. So wahan pe I think for me, social media, or especially Instagram started as a image-based, social media. I still remember my friends telling me that because you love photography, go and make an account on Instagram. On 2010, I made my account because I love photography. And it started off as a, image-based social media. So I always say that, when it comes to Instagram or any social media, your image catches the, attention. It's the first point of any user probably who would scroll your account or go to, your account or, see your work or anything. So if the image is blurry, if the image is unimpressive, so I think वहाँ पे तो you lose the game. Okay, so लोग कहते हैं scroll stopping captions, but साथ में scroll stopping photography. I would say stare stopping image, something like that. So that you stare and then you stare and then you stare. It should be like that image. And we see lots of beautiful pictures on your feed. So definitely thank you so your much. work, your experience helps you there, and you show it in a very beautiful way. So ये जो अभी हमने बात करी importance of good photography, और आपने पहले भी बताया कि you used to click with DSLR. तो अभी अगर बात करें फोन फोटोग्राफी वर्सेस DSLR, तो DSLR तो आई बिलीव आजकल ज़्यादातर हर किसी के पास है, भले ही उनको इतना उसका टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं पता हो. इवन आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे ऑटो के सिवा किसी और मोड पे फोटो लेना नहीं आता है, मुझे नहीं समझ में आता कि अब मैं क्या लगाऊं.
तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि फ़ोन फोटोग्राफी वर्सेस डीएसएलआर में आप किसे पिक करोगे? अगर आप एक एमेटर हो तो आप क्या बोलोगे? देखो मैं जब मैंने जब शुरू भी करी थी फोटोग्राफी, तो मैंने तो आज तक फ़ोन से खींच के कोई फ़ोटो डाली ही नहीं है. मतलब मेरे लिए तो शायद वो एक कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता फ़ोन फोटोग्राफी का, ऑनेस्टली स्पीकिंग. इट इज़ जस्ट मतलब मेरी फीड्स पे यू विल नॉट सी एनी सिंगल फोटो विच हैज़ बिन क्लिक्ड बाय अ फ़ोन. Okay. So all my images are clicked on DSLR, whether it's good or bad or whatever, it is shot on DSLR. Because for me, phone photography, it doesn't give you that kind of quality, the profound quality which a DSLR gives. And I understand, because professionally, when you pick up, when you are a photographer, I don't think any photographer will ever, pick phone photography. Though we have amazing phones out there who gives amazing images, like Google Pixel, and for that matter my own phone Samsung S10. So lekin I would always say DSLR is a DSLR. Yes, you need to spend time, you need to understand. So the only preference of phone photography, Maitri, is that because social media is all about instant emotion, it's about instant thing, like right now. So for there, I think phone becomes a handy and a very like an accessible thing. You can just click right away, post it right away. Okay, you can give a little bit edit. वहाँ पे I think it's the only DSLR is very उसको carry करना, फिर उसमें image, और वो वहाँ पे थोड़ा time consuming हो जाता है. And आजकल when social media is a very evolving, every minute it is evolving. There are trends coming in, there are so much happening, it is just like supersonic speed पे चल रहा है. So therein the phone comes in. But when you really want to do a photography in terms of if there's a brand collaboration, if there is I would suggest start with phone, but then please do switch. If you really wanted to see yourself as a content creator for the longest of the time, do not compromise on the quality of your photography or your photos or your images. Get a good camera. Now we are also getting mirrorless DSLRs. I mean, they are not DSLRs, but they're mirrorless. Again, it's a very good, they give a very good quality images, better than, of course, the phone. So I think if you're a serious into business, now depends on the motive as well. Like अगर मैं सिर्फ एक साल के लिए कुछ ऐसी Instagram कर रही हूँ, तो phone ठीक है. Why you invest huge amount of money in a DSLR? But if you really think it as a profession, and to all the bloggers and influencers, I would strongly recommend that get a DSLR, spend time, start doing it. It's really important, and trust me, it will just take your work to another level. So phone is like I do phone photography for my stories. Okay, whatever is on my stories, that is also edited. Not a single story image, if you will see, everything is edited nicely, cropped, and when the composition gives me okay, like I feel this is okay to go out. Because as a content creator, it's very important to handhold on the quality of your work. Yes. आप अपना quality नहीं degrade कर सकते हो. Now whatever niche or whatever space you are working in. And if you will see the top-notch content creators or the bloggers, their game is absolutely amazing in terms of the content part, because their images are so professionally shot. They are very nicely done. So I think phone photography is good, but then if you're serious in the business, please switch to DSLR or the mirrorless, wherein you understand, और जितना आप कैमरे के साथ time spend करोगे, you will understand it. It is just about spending time with the camera. ओके. सो अगर अभी कोई कैमरा लेना चाहता है, तो व्हाट डू यू रेकमेंड? डीएसएलआर लेना चाहिए या मिररलेस लेना चाहिए? मिररलेस, ऑफ कोर्स, इट्स दी टाइम जहाँ पे आपको जैसे DSLR अगर लेते हैं तो वहाँ पे तो थोड़ा सा लो लाइट में भी आपको सेटिंग्स में थोड़ा सा यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड ऑल. मिररलेस इज गुड फॉर अ बिगनर्स, दे कैन अंडरस्टैंड. बट देन if you will switch from DSLR to mirrorless, I think that is more beneficial for you, because then you will understand that what photography and the techniques are. You will understand the shutter speed, you will understand the ISO sensitivities and all that stuff. So I think conventional way से अगर आपको करना है तो वो एक सही तरीका है. Mirrorless is actually for content creators and for people who are like young generation who are into blogging and capturing and all that stuff. So I think both are good, but then in what space you are, I think it's that. So if you're a professional photographer, of course they'll go for the DSLR and the lenses and everything. So that's it is.
हाँ, ये होता है कि ये जो पुराना प्रूवन सिस्टम है, लोगों को लगता है कि यस इट इज़ वर्किंग वेल। मेरे हस्बैंड भी यही बोलते, कहते हैं कि मिररलेस तो अभी आ गया है, बट वो जो है डीएसएलआर की बात अलग होती एक्चुअली है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। मुझे तो डीएसएलआर, मतलब जब तक मैं खुद से सारी सेटिंग ना करूँ, मुझे 10 चीजें समझ में नहीं आएंगी तो मैं नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। आपको मैं एक पॉट रखूंगी, 4 लोगों को बोलूंगी 4 फोटोज खींचो, चारों अलग खींचेंगे, यू नो, डीएसएलआर से। यस। सेटिंग्स, क्योंकि सबकी इमेजिनेशन अलग है। आप समझ लो, ये एक इमेजिनेशन का गेम है, क्रिएटिविटी का गेम है, टेक्निक्स का गेम है। सो देर आर सो मेनी थिंग, व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, वो उस हिसाब से मैं खींचूंगी। तो आई थिंक डीएस फॉर मी हैंड्स डाउन एवरीथिंग कम्स डाउन टू डीएसएलआर। ओके। सो ठीक है, अगर किसी के पास डीएसएलआर है या मिररलेस है या मे बी फ़ोन है, तो लेकिन दे आर बिगिनर्स। हमारे बहुत Correct. सारे मॉम ब्लॉगर्स हैं या अदर ब्लॉगर्स हैं, दे आर जस्ट स्टार्टिंग विद फोटोग्राफी। True. तो उनके लिए आपके पास क्या कोई स्पेशल टिप्स हैं जो आप चाहते हो कि हर किसी को पता होनी चाहिए बिफोर दे स्टार्ट क्लिकिंग पिक्चर्स, इफ दे वांट गुड पिक्चर्स? Yes, सबसे पहले तो I think you need to understand the setting of your phone. You know, if you have a phone or if you have a camera, I would talk about phone because I think majority does their photo shoots on the phone. So phone की settings होना बहुत important है, जानना बहुत important है, you know. Little bit understand कैसे, कहाँ पे brightness बढ़ रही है, क्या लो, because वहाँ पे restrictions हैं आपके पास, you know, you're very limited. And I think few things which you always need to keep in mind is the shot should not be blur. You know, if you're doing a product if you're shooting with a product, the product should be clear. It is very important. If you are doing a brand collaboration and you are doing a static pose, but your product is not visible, if the brand itself is not visible, what's the point? There's a problem there. So I think that is very important to always understand. Second is that, you know, alignment and the geometry. टेढ़ी मेढ़ी photos बहुत मुझे खलती हैं सोशल मीडिया पे कि ये मुझे समझ आ रहा है ये दीवार टेढ़ी है, बट जिसने डाली है उसको क्यों समझ में नहीं आया ये दीवार टेढ़ी है, या पीछे से एक फ्लावर अजीब सा निकल रहा है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन एंड द ज्योमेट्री ऑफ इट. क्लिक कर लिया, उसके बाद यू कैन एडिट इट. सो एडिटिंग अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, रोल प्लेइंग, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो आपको अलाइनमेंट, अपनी ज्योमेट्री ठीक करनी है, दैट यू नो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए फ्रेम, यू नो, इट शुड नॉट बी स्लैंट. That's very, you know, disturbed alignments looks very shabby on social media and it gives a very, it's not impressive, it's not impactful. अगर आप खड़े हो कहीं पर वो दीवार टेढ़ी ऐसे आ रहा है तो, or anything, you know, like a tree coming absurdly from your head or wherever, or the flower, or your feet are not there. लोग डाल रहे हैं फोटो, पैर ही कट गए, so वो बहुत अजीब लग रहा है. Now either take the shot as a portrait shot, which is still, you know, probably till your tummy, or just take a full shot, you know, or the full length. So you have to understand. So it's always very important to think before you shoot कि मुझे ऐसा करना है. So, you know, as a mom blogger or as a blogger or as an influencer, you have to ready with your in your imagination that what you really want to shoot. Third is, I think styling is very important. You know, it's you know, what colors you are wearing, what colors against what wall or what outdoors you are using. How that entire composition with look with the colors is very important. You cannot go wrong with the styling. You should, I mean, it is the universal law that always, if you are just clueless, just go with the pastels or the whites, you know. Go for light shades everywhere. It looks beautiful. It is very safe to play. But it is very important to give a good stylized, you know, photo. Now, when I say stylized, it doesn't mean that you have to, आपको पूरा सजना है. वो नहीं है उसका मतलब. सजना नहीं है फोटोज में. आपको सिर्फ, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर वेयरिंग, व्हाट इज द कलर ऑफ व्हाट यू वेयरिंग, अगेंस्ट व्हाट बैकड्रॉप यू आर स्टैंडिंग. Is there a mismatch, or it is going with the vibe of it? And what is the product you are holding? Or what is your baby wearing, you know? And what is the entire room looking like? So these are the things to obviously keep in mind. ठीक है, नेचुरल लाइट होनी बहुत जरूरी है. दैट यू टू प्ले विद द नेचुरल लाइट, यू नो. डोंट, फोन फोटोग्राफी का सबसे बड़ा लूप होल ये है कि दैट लो लाइट में इट डजंट गिव गुड इमेजेस, यू कांट जूम, you know. So I think there, when these rules also apply in DSLR as well, you know. If you're a beginner with a DSLR also, you have to keep these things in mind, of course. But then wahan pe you can play with the low light, even if the room is not that lit, you can still, you know, adjust the settings and you can still do a good shoot there. So I think that's very important, and I always prefer natural light than external light. You know, so flash though is a big no. Never use a flash. It's just spoils the mood of the photo. So never use a flash. And then I think
over editing bhi is a problem wherein you just change your face and everything with aajkal wo jo apps aa rahe hain. I think that looks very odd wherein you're you increase your eyes and you give a jawline. I think those things looks very awkward, and or you probably paste or do something with the. I mean, creatively, if you're, I really don't prefer too much of an Photoshop and editing as well. Just keep it real and low. I think that's really like minimum. जो कहते हैं ना, less is more. So I think with photography, just go with these basics in mind and just keep the emotion intact. That's very important. So these are the things I would always suggest that you should keep in mind. ओके, वाओ, आई लव्ड इट. अब मुझे अपनी फीड पे अगर वापस जाके देखूंगी तो मुझे बहुत सारी कमियां मिलने वाली है. कोई बात नहीं, हम सब लोग ऐसे ही सीखते हैं. तो मैंने भी ऐसे ही सीखा था. यस यस. ओके, सो अच्छा, जैसे अभी आपने बताया टिप्स, तो देयर आर सम मिस्टेक्स दैट वी बिगिनर्स मेक. तो ऐसी कोई मिस्टेक्स हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड वी शुडंट बी मेकिंग देम? आई थिंक यही मिस्टेक्स होती हैं कि शॉर्ट खींच लिया, ब्लर डाल दिया, और एट टाइम्स ऑल्सो वन मोर थिंग आई जस्ट रिसेंटली आई सॉ इन फ्यू ब्लॉगर्स इमेजेस वेयर उन्होंने दे पुट द पोस्ट द इमेज and it was a brand, it was I think a sponsored or a branded content. And because it was shot on a selfie, so the brand name was in reverse. Oh god, that I see a lot. Okay, and I was actually surprised because that person was repeatedly doing that, and I was like, hey, I really have to tell her this, that it's. Then I actually posted, I just mentioned her that this is one feedback I really wanted to give it to you. Please flip the photo. So the moment you flip the photo, the brand name will come clear. Yes. So these are the very small things that you have to keep in mind if being a content creator and you're working with a brand and you're promoting a brand, but as a audience, I'm not able to understand the brand name. Yes. And it was a beautiful shot. It was nicely done, but I couldn't understand the brand name. So I think these are the mistakes as an influencer you should never be doing. I mean, you have to keep checking on it. And also click a lot for influencers and bloggers with the product or with your own mood shots. Click a lot and then probably choose the best shot. ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में एक shot आपने खींचा वो ठीक नहीं आया but you are posting it. Do not compromise on the quality. Don't post if you don't have a good image. Please don't post. It's not necessary. You wait, you create, you think. It's very important to time and again keep thinking that this is what creatively I can do or this is what I should do. You have to brainstorm internally. You have to write it down, the ideas to shoot. And then one day sit and do the shoot. So work like this. Instead of just rapidly clicking and posting where the image is not it's a very mediocre or probably a very cliche image, which so हम सबके पास देख रहे हैं. So अगर आपको थोड़ा serious होना, I think these are the things which you should keep in mind. And again, as I said, styling of the photo, of the image is very important, Right colors and right vibes. And go real and, like do nice mood shots and give variety. If you're a blogger, again, even if you're working at a mother and child space or being a mom blogger or a beauty blogger, I think it's always good when you show variety to audience, wherein you show something which they were not expecting out of you. So I think it's really good to surprise the audience as well with the shots. ओके, ये जो आपने बोला ना मीडियोकर जल्दी में पिक्चर्स क्लिक करना, तो ये मैंने किया हुआ है और मुझे अपनी सारी यादें आ रही हैं जो मैंने 2 साल पहले या लास्ट ईयर भी की होंगी कि नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, बस डेडलाइन है कि डालना है तो डाल दी. करेक्ट. हम सब ने किया ये, तभी तो देखो मुझे कहाँ से समझ आया क्योंकि मैंने खुद की हुई है ये सब चीज़ें, इसलिए मुझे पता है ये सब लर्निंग्स और आगे नहीं करनी है, तो ऐसे ही हम सीखते हैं. राइट. अच्छा, आपका कोई फेवरेट फोटो एडिटिंग ऐप है जो मे बी यू यूज ऑन योर डेस्कटॉप और ऑन योर फोन? Yeah, I mean Lightroom is I think the best as of now. It's very easy. फोन के लिए Snapseed बहुत अच्छा है, बहुत कन्वीनियंट है. तो मैं Snapseed यूज़ करती हूँ और मेरा Samsung का इनबिल्ट है which is again very good. So yeah, I think these two, Lightroom and Snapseed, is something I just use. That I mean इसके अलावा मैं कोई use Photoshop बहुत, अगर Photoshop is for the clients, I mean that's something where it's a big, I mean, product or a brand shoot I do but for for the blogging or for, social media, I use these two apps. Okay. And which camera do you use? Would you like to share that? Yes, I use a very basic Canon 700D. And you have a variety of lenses?
I have 3 lenses, but I shoot on 50 mm portrait lens. मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट है. हाँ, वही है अभी बस. अब I will be switching to 85. So 50 and 85 is something I really like. तो ये दो अभी तो 50 mm पे ही बहुत अच्छे से मेरा मैं काम करती हूँ. ओके. मुझे ये सब ज्यादा पता नहीं, बस मुझे नाम पता है. टेक्निकल कुछ नहीं सबको नहीं वो सबको थोड़ा बहुत आइडिया होता है. एक ही 50 mm होता है, एक ही होता है, बस इतना ही पता है. हाँ जी सही कह रहे हो. आई थिंक यू आर वेल वर्स्ड. ओके. एंड ठीक है, फोटोग्राफी की बातें हो गई, तो थोड़ा सा फन की तरफ चलते हैं. तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन आपके सोशल मीडिया पे भी पूछा था, बट आज मेरे लिसनर्स के लिए पूछती हूँ कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? हाँ, आपने मुझसे पूछा था और मैंने बहुत बड़ी लिस्ट दी थी. तो मेरी मैं एक लिटरेचर स्टूडेंट रही हूँ. मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, बट तब बड़ी मजबूरी में पढ़ी थी क्योंकि तब लगा था कोर्स है, कंप्लीट करना है, नंबर मिलेंगे. पर उन किताबों ने एक्चुअली मेरी लाइफ काफ़ी चेंज कर दी. उन्होंने मेरा पर्सपेक्टिव्स चेंज कर दिए थे. तो आई थिंक अभी भी मैं बात करूँ तो I really like Many Lives and Many Masters and Shadow Lines by Amitav Ghosh. चोखेर वाली, मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की सारी बुक्स बहुत पसंद है. कमला दास की शॉर्ट स्टोरीज. I think these are the books I really love and I keep on reading them. There's a book by My Geeta by Devdutt Patnaik. I'm a big fan of Devdutt Patnaik as well. The way he writes and narrates the Indian mythology is completely, different. Okay. Tell us the name of a woman you admire the most. I think everybody says their mom. Like I also admire my mom a lot in many ways. But मैं उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो तो मैंने संभाल ली है. बट मैंने ज़रूर कोशिश करी कि जो उनमें खामियाँ थी वो मैं ना लाऊं. बट फिर भी मेरे बच्चे कहेंगे मुझ में है, ऑफकोर्स, क्योंकि मैं भी कोई फुल प्रूफ नहीं हूँ. बट ऑफकोर्स माई मॉम इज़ अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ एंड आई थिंक एवरीबडी नोज इट वेरी वेल. एंड उनके अलावा आई थिंक I don't know. I mean, I have to think. मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं. मतलब I actually see there are a lot of people, lot of women I admire, but maybe the audience would not know them. They're not because मैं biography से पढ़ के मैं नहीं, but like my family members, I take good things from them and that's what I admire a lot. In like my mother-in-law, I admire her few things which is still very commendable for me and I really enjoy seeing her. So I think इंदिरा गांधी की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी. एक जब हम पढ़ते थे मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा था her leadership quality and all, and I always kept in my mind that she's one leader, a women leader India had. So I think in some ways, not in all ways. So yeah, but I think I don't know, and women as of these are the few women I really admire. Yeah, that's understandable. Okay, तो इतनी अच्छी बातें हो गई. अब ये बताइए श्वेता कि what's the most useless talent you have? Useless talent? I have many useless talent. I can fight for no reason with my husband. मैं ऐसे पता नहीं यार, ये तो इतने सारे टैलेंट्स है, याद नहीं आ रहा है. यूजलेस टैलेंट बड़े पर्सनल होते हैं. नहीं यूजलेस टैलेंट बड़े पर्सनल होते हैं, वो ऐसे आप बता नहीं सकते हो. सो आई एम जस्ट फिल्टरिंग कि कौन सा मैं बता सकती हूँ, मैं कौन सा नहीं बता. समझ रहे हो? बिल्कुल मैं ऐसे मैंने बोला है मैं शेमलेस हूँ, बट मुझे थोड़ा अपने घर की मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा. तो मैं इसलिए सबको जैसे ओपनली नहीं बता सकती. बट या आई मीन वन मोर थिंग, आई मीन दैट्स अ वेरी यूजलेस टैलेंट, बट इफ आई मीट समबडी एंड आई रियली वांट टू इम्प्रेस, सो आई डू अ लिटिल बिट फ्लर्ट एंड ऑल दैट, एंड आई डू दैट इन फ्रंट ऑफ माय हस्बैंड एंड विद हिज guy friends and all that. I really do that. I love doing that because then he make faces and I enjoy that. And जब घर में आके इस पे लड़ाई भी होती है मुझे बड़ा मजा आता है कि मतलब yes I did it. I really love that because obviously when you go and hang out. So I think this is again a very useless talent, but I really enjoy doing this because that's the only thing जिससे मैं उसको परेशान कर सकती हूँ, और कोई चीजें नहीं जिनसे मैं उनको परेशान कर सकती हूँ. I think that's something I really enjoy doing. Do little bit flirt with his friends and all that. Yeah, so I think that's what I do. And I still do it. Okay. I still do it even after having Shivan. I still do it. Okay, and I think your beauty helps. I don't know that, but yeah, chalo, beauty तो देखो, I always say, it's in the eyes of the beholder. My husband, अब देखो ना, अगर लड़ाई करे तो वहाँ beauty कहाँ काम आई, तब तो उसको he thinks me as a monster, है ना, तो वहाँ पे कहाँ beauty क्या है. So it's the perception,
It's the perception, Yes. it's the thought. Yes, तो yes. वो वहाँ पे है, yeah. Okay. And is there a celebrity you would rate as perfect 10? I like Kareena Kapoor. Nobody's perfect for sure. Okay. And then I like Kiran Bedi a lot. I think he's a very strong, and I really like her, working, and now that she started a, very beautiful positive living thing as well. So, or yeah, I think I would go for Kareena Kareena Kapoor Kapoor and and Kiran Kiran Bedi. Yes. Okay. Yeah, I think these are the two living person. I really like her style and motherhood and how she's so cool and chilled out, every time. And of course, Kiran Bedi being a very strong and such a amazing. I mean, of course, she's a celebrated officer. So I think, and the way she led in that entire nationalism. जो देश के लिए बात करते हैं वो लोग अलग ही होते हैं, तो वो जो चीज़ है ना वो बहुत अमेजिंग है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है. ये तो मुझे काफ़ी अच्छा. Yes. Okay. और ऐसी कौन सी चीज़ है योर ब्रेन ट्राइज टू मेक यू डू और आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं 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 ये नहीं करना है? खाना खाना खाना. मैं बोलती हूँ मुझे एक अलग जन्म लेना पड़ेगा सिर्फ fearlessly खाने के लिए. आई टेक केयर ऑफ माई, बिकॉज आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है और वो सब चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको कम खाना पड़ता है. आई डोंट इंडल्ज इन टू मच जंक एंड ये सब चीज़ें. तो मैं खाने में बहुत कंट्रोल रखती हूँ. तो उसके लिए मुझे मेरा दिमाग कभी कभी बोलता है, दिल बोलता है खा ले, कुछ नहीं हो रहा, बट होती नहीं नहीं, यू हैव टू कंट्रोल, यू हैव टू कंट्रोल. तो एक यही चीज़ है जो मुझे आई थिंक आई हैव टू या. Okay. And what's the first thing you do after you pick up your phone? I check Instagram. 90% गैस का यही आंसर है. आई थिंक 90% से ज्यादा 99% गैस सही बोलते हैं. मतलब मेरी शायद अगर ऐसा होगा कभी कभी कि मेरी आँख भी नहीं खुली है, हाँ. तो भी जैसे मतलब अगर मैं फोन बज गया, मेरी उंगलियों को भी पता है कि इंस्टाग्राम ऐप कहाँ पे है, वो चला जाएगा. तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है अपनी स्क्रीन में, किसी से बात करते करते भी अपना इंस्टाग्राम खोल सकती हूँ. I'm that pro. Okay. So that's like mind has been conditioned in a way now. मेरा दिमाग इतना वो हो गया कि अगर मुझे WhatsApp खोलना है तो पहले WhatsApp नहीं खुलता, पहले Instagram खुलेगा. वो फिंगर वहीं चली जाती है. वहीं चली जाती है वो. तो पता नहीं क्या कंडीशनिंग, वो रीवायरिंग ना ठीक करनी पड़ेगी मुझे अपने दिमाग की. Okay. And can you describe yourself in 3 words? Compassionate, creative, and I think very simple. Okay, a very simple person who is compassionate and creative. And creative, yeah. Yes, wonderful, wonderful, Shweta. It was lovely speaking to you. और जितने अच्छे से आपने बात करी, बहुत ही ऑनेस्टली भी आपने सब कुछ शेयर किया, चाहे वो आपकी फोटोग्राफी के टिप्स हों या आपके जो स्ट्रगल्स हों, सब कुछ आपने बहुत बहुत ऑनेस्टली बात करी, बहुत अच्छे से बताया. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर कि जो लिसनर्स हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा ये सुन के कि क्या सिखाने वाली है श्वेता या कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया. तो यू विल डेफिनेटली मोटिवेट a lot of people with this chat. So thank you so much Shweta for your time. Thank you so much Maitri. I'm so glad, and मुझे इतना मजा आया बात करके, and I'm really looking forward कि अगर शायद कोई भी, जितने भी हमारे listeners इसको सुनेंगे, they just feel that just always believe in yourself and just believe that higher self of yours को जो भी रास्ता दिखा रहे हैं वो सही है. Just have faith on yourself. I mean, you should never stress on anything. It's not worth it. It's absolutely not worth it. You can connect with Shweta on Instagram. Her handle is Shwetas and it's spelled SHVTAS. Connect with her for photography ideas and lots of positivity. Thank you for giving your valuable time to Little Fixes podcast today. Hope we helped you in improving your photography. अब अगर आपको कनेक्ट करना है लिटिल फिक्सेस से और क्लोजली, तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं @littleFixesPodcast. और हाँ, आप हमें स्टोरीज पे शाउट आउट दे सकते हैं. स्पेशली इफ यू लाइक दिस एपिसोड, यू कैन टैग मी एंड श्वेता इन योर स्टोरीज एंड गिव अस अ शाउट आउट ऑन इंस्टाग्राम. और अगर आप कोरा हिंदी पे हैं तो वहां पे आप मेरा स्पेस यानी कि मंच लिटिल फिक्सेस भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. और अब इस एपिसोड को फिनिश करती हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे. वेट कीजिए और सदा सैसी रहिए. बाय.